All right, without any further ado, I guess we can start. Hi, Aditya. How are you doing? I'm good. How are you? I'm good. I'm good. Sorry for the delay. The No problem. Zoom. Yeah. It's understandable. Okay. Anyway, thank you so much for joining in and taking the time of your busy schedule. So going back a little bit into the past, when and how did you start getting into the sports? Is there any athlete or a role model that you looked up to growing up? So for me, I would say it started by accident. So I have always been working out. As you all know that I'm into powerlifting, but I have been working out since my childhood days uh, while growing up. But I think it happened in somewhere around 2018 while I was working out in the gym. My trainer kind of wanted to test how much I can bench press, right? So we tested my limits that day, and I was able to bench press 100 kgs. And that's when he said casually that, why don't you try something like sports if you are able to lift so heavy? We laughed it off at that time, but I think that thought somehow remained in my mind. And then I started looking, finding out more information. Thankfully, I found contacts that helped me get into the sports, and that's how my journey began. That's wonderful. We are really happy that your journey began that way. That's nice. Yeah. And how is your family support and parents support towards this whole thing? My parents have always been supportive. See, like any parents, right? And especially when you have a child who is physically challenged, right? They are scared. I will not say that they have not been scared, but they have never stopped me. That's one thing I'm really thankful about. Uh, they have always pushed me, supported me, and helped me grow towards the next level. So yes, they have been scared. They have even expressed their fear with me, and which is very natural for any parent to have towards their child. So Yes. that's very understandable. But they have never stopped me. Yes, and they have pushed me. In fact, motivated me, and they have even been with me to my competitions, like supporting me there as well to ensure that I have all the moral support that I need. That's wonderful. Talking about competing, do you remember the first time you ever competed in a sports competition? And what was that like? Your first experience? So my first experience was with my guru, Darika sir, who is not in this world anymore. May his soul rest in peace. He started training me in Mumbai, and there was a competition coming up, and he said that you are ready, and let's just go and take part there. And I was like, I was not even thinking of competition at that point of time. I had somewhere future plans to take part in the competition, but he said that it's next week and I feel you're ready, so let's do it. And that's how it started for me. Thankfully, I won a gold medal in that competition, and from then I never looked back. That's wonderful. And how long were you training before your first competition? I trained for about good 3-4 months, like rigorous training for the competition. And your first competition is powerlifting, right? Yes. I played multiple sports before. I played wheelchair tennis, I played wheelchair basketball, I played wheelchair table tennis as well. So I've tried different sports, wheelchair cricket as well. Tried different sports, but no other sport spoke to me the way powerlifting did. That's why I went into powerlifting. And you had to train a long, exhausting hours to get to the competition, right? Yes, it is. For people like us who are physically challenged, it takes a longer time to train for any competition.
And that's why it's always advisable to choose your competitions and prepare well rather than taking part in all the competitions. So thankfully, I was guided well by Darika sir there. He always told me that choose 3 or 4 competitions in a year, not more than that, because you would need at least 3 to 4 months to train properly for that competition if you intend to win. If you just want to take part, you can take part in any number of competitions. But if you intend to win, every competition will take about 3 to 4 months of rigorous training. Yeah, because we saw a couple of your training videos and it's very commendable. So where do you find the energy and courage to train so religiously? Especially for a person like us with a certain limitations and disabilities, it could get tiresome. So how do you keep pushing? I think it's all about finding your passion. As I said, it's about anything you do, right? If you go to a job that is to your liking, it's not something that will be very tiresome for you mentally or emotionally, right? You would be looking forward to go to work every day. So picking up a sport which speaks to you, which is something you like doing, and probably relating to it. For me, powerlifting is something that relates to my challenges in life as well, wherein it motivates me to keep pushing forward. So powerlifting for me challenges my limits in a way that I like my limits to be challenged. So that's the motivating factor for me to keep pushing forward. That's wonderful. Thank you so much for that. And I believe our next speaker is also online. Maithili, would you like to take it away? Maithili is my fellow moderator, and she's in human resources, and she is helping me out today. Please, Maithili. Thank you, Chandana. Thank you so much. And thank you, Aditya. It was very insightful. So, hi, Khushi. How are you? Hi, Maithili. How are you? Thank you. I actually know Khushi very long back. So, yeah, we are a very good friend. So, now I have a privilege to ask many questions to her and learn many things. So, yeah. So, Khushi, you have been in this sport for a very long time. You started, I guess, in 2016. So, तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको स्पोर्ट्स से बहुत अच्छी लगती है और आपके कौन से इंस्पिरेशन एथलीट या कौन इंस्पिरेशन है जिससे आपको अचीव करने की इंस्पिरेशन मिलती है स्पोर्ट्स में व्हाट थिंग्स यू लाइक इन स्पोर्ट्स मोस्ट यस फर्स्ट तो मैं मेरे जो जिनसे मैं इंस्पायर हुई तो वन ऑफ द दीपा मलिक एंड सेकंड वन इज मिताली राज जिसने इंडिया को बताया कि क्रिकेट इज नॉट ओनली फॉर द मेंस गेम मतलब क्रिकेट फॉर एवरीवन मिताली राज बिकॉज उनको मैं काफी अच्छे से उनको फॉलो कर रही हूँ और मैं उनसे पर्सनली जुड़ी हूँ मतलब मिली भी हूँ तो आई नो उनका जो स्ट्रगल रहा है जो फिलहाल मैं भी कर रही हूँ कहीं ना कहीं एंड ऑफ कोर्स दीपा मलिक मैम जिन्होंने फर्स्ट वुमन एज अ पैरा ओलंपिक के लिए इंडिया के लिए मेडल लाया एज अ एज ऑफ 40 और 50 मे बी आई एम नॉट श्योर बट शी इज द फर्स्ट वुमन जिन्होंने पैरा ओलंपिक के लिए मेडल लाया इंडिया के लिए मतलब करेक्ट सो कौन सी चीज है खुशी जो आपको बहुत इंस्पायर करती है स्पोर्ट्स को एवरी डे टू पुश योरसेल्फ एंड डू सो व्हाट थिंग्स यू लाइक इन स्पोर्ट्स मोस्ट सॉरी आई एम नॉट हियर प्रॉपर्ली ओके सो मेरा क्वेश्चन था ऐसी कौन सी चीज है स्पोर्ट्स की जो आपको हर दिन उठ के करने का मन करता है कि हाँ दिस इज इट आई वांट टू पुश माय बाउंड्रीज एंड डू सो व्हाट थिंग्स यू लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स ओके मैं फर्स्ट तो मेरा चीज जब मैंने स्पोर्ट्स चालू किया था ना तो आई एम लकी कि मुझे बहुत अच्छा फ्रेंड भी मिला एक स्पोर्ट्स रिलेटेड और जितना मैंने उसने मुझे सिर्फ यही बोला व्हाई यू वांट टू स्पोर्ट्स एक जब रियल स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना इफ यू वांट टू बी रियली स्पोर्ट्स इन योर लाइफ तो आपके अंदर एक हंगर आ जाती है इफ यू आर ट्रू हंगर ना मतलब एक हंगर होना बहुत जरूरी है क्योंकि स्पोर्ट्स के साथ अपनी डेली लाइफ और अपने स्पोर्ट्स को दोनों को मेंटेन करने के लिए यू रियली नीड बहुत लेवल बना के रखना पड़ता है बिकॉज स्पोर्ट्स एंड पर्सनल लाइफ इट्स इम्पोर्टेंट मतलब मुझे स्पोर्ट्स
मेरी लाइफ में डिसिप्लिन लाता है कि मुझे कुछ करना है, और वो मुझे हर चीज के लिए, मतलब अगर आज मैं हारी हूँ तो कल मुझे वो जीतने के लिए एक स्ट्रेंथ देता है. तो या स्पोर्ट्स चेंज करेक्ट. माय लाइफ, एंड स्पोर्ट्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी इन माय लाइफ बिकॉज ही मेक मी अ गुड ह्यूमन बीइंग. बिना, वो मुझे सिखाता है कि किसी भी चीज को डरने की जरूरत नहीं है, बस कीप प्रैक्टिसिंग एंड वन डे यू विल बी विन एनी हाउ. करेक्ट, डेफिनेटली आई रियली रियली एग्रीइंग विथ योर पॉइंट कि स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जो हमें अक्रॉस एनर्जी देती है. सो इट्स लाइक फॉर यू आल्सो. सो खुशी, मुझे ये बताइए कि in the sports or process there are many injuries and pain daily face. So how do you overcome this kind of pain and exhaustiveness in the process of training yourself? व्हेन यू आर स्टार्टिंग में ट्रेनिंग में, ऑफ कोर्स 23 इयर्स तक मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया था. उसके बाद आई स्टार्ट टू स्पोर्ट्स. तो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग डेज में काफी पेन होता था. तो वो पेन के लिए मुझे भी सीखना पड़ा कि कैसे इस सारी चीजों से डील करना है, एवरी डे डील करना. देन वर्कआउट, आप जब एक पेन प्रैक्टिस करते हो ना माइटली, तो वो पेन भी धीरे धीरे आपको एक पैशन बनता है. नो पेन नो गेन वैसे वाला. तो या स्पोर्ट्स के लिए सीखा, स्पोर्ट्स खेलना है तो उसके लिए डाइट भी उतना जरूरी है. अगर आप चाहते हो कि आपको ज्यादा इंजरीज ना हो, बॉडी पेन ना हो, तो आप जितना वर्कआउट करते हो उसी के ऊपर आपको आपकी रिकवरी के ऊपर भी ध्यान देना है. हाउ मच यू आर प्रैक्टिसिंग, मतलब आप जो आपका स्पोर्ट्स खेलते हो, फिर स्पोर्ट्स खेलने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, तो वो सभी के साथ आपको अपनी बॉडी को रिकवरी भी कैसे देनी है, कितना उसको मेंटेन करना है विद, और साथ में फूड भी, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, प्रोटीन, सो मैनी थिंग्स. स्पोर्ट्स सिखाता बहुत कुछ है. Correct. So everything like Khushi rightly said कि we talk about sports exercise, but बहुत कम लोग हैं जो recovery के बारे में बात करते हैं कि after pain what kind of recovery things we should do that. So you rightly said that. या रिकवरी बहुत ज्यादा जरूरी है मैथिली, बिकॉज एक गेम खेलने के लिए नेशनल लेवल के लिए हम 1 ईयर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उस 1 ईयर में हमें रिकवरी भी बहुत ज्यादा जरूर ध्यान देना पड़ता है. मतलब सबसे पहले तो ट्राई करो आपको इंजरीज ना आए स्पोर्ट्स खेलते हुए. So as a Khushi, so as a disabled person, being in the sports, we have not privileged with everything. Like we have हमें कोई extension की जरूरत होती है. Like some people as a disabled, they use catheters, and other equipments which helping them to do a daily course. So how do you feel कि using catheters or other things which you use as a disabled person, how do you manage it in the sport? आप कैसे स्पोर्ट्स में मैनेज करते हो ये सब चीजें? फर्स्ट आई कम टू कैथेटर. तो या मैं खुद भी कैथेटर करती हूँ. I'm a Spina Bifida, so या मैं कैथेटर करती हूँ. तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा दिक्कत आ रहा था, बट देन आई स्टार्ट टू ट्रेन माय बॉडी कि मुझे एवरी 2 इयर्स पे कैथेटर करना है, और वो 2 आवर्स के बाद, वो 2 आवर्स में मुझे प्रैक्टिस करनी है, और वापस 2 आवर्स के बाद मुझे इमीडिएटली कैथेटर करना है. बिफोर प्रैक्टिस मैंने ऑलवेज माइंड में रखा है मुझे कैथेटर करना है, आफ्टर प्रैक्टिस कैथेटर करना है. और उन चीजों के साथ मैंने खुद को आदत डाली कि मुझे बाहर जाना होगा, तो आई ऑलवेज वांट टू बी कैथेटर विथ मी. तो आई ऑलवेज कैरी वन इन माय व्हीलचेयर, वन इज माय बैग एंड वन इज माय लगेज बैग. तो मैं ऑलवेज 3 कैथेटर अपने साथ कैरी करके घूमती हूँ, क्योंकि कैथेटर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर डिसेबल पर्सन्स, बिकॉज वो बहुत ज्यादा जरूरी है. सेकंड, इक्विपमेंट्स, कौन सा गेम खेलते हो उसके ऊपर है कि कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है. व्हीलचेयर ऑफ कोर्स दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी. करेक्ट. जो आप इक्विपमेंट्स का बोल रहे हो, मुझे तो हर स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग इक्विपमेंट लगता है, बट एज अ स्पाइना बायोफिडा आई एम प्लेइंग, तो मुझे जो चीजों की जरूरत पड़ती है, इट्स वन ऑफ फर्स्ट थिंग कैथेटर विथ माय व्हीलचेयर, इट्स ऑलवेज. सेकंड,
कि मैं जितनी मुझे और ज्यादा चीजें, हाँ, बट मैं ऑलवेज कैरी करती हूँ कुछ मॉइस्चराइजर, बिकॉज 24 आवर्स मुझे व्हीलचेयर पे बैठना होता है, तो आई यूज मॉइस्चराइजर फॉर माई, जहाँ पे मुझे बैक सोर्स वगैरह ना हो, तो मैं अपनी स्किन को बहुत ज्यादा ये मॉइस्चराइजर लगा के रखती हूँ कि वो ड्राई ना हो, बिकॉज स्किन जब ड्राई होती है तो सबसे ज्यादा बैक सोर होने के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो लकीली आई मेंटेन, मैंने सिर्फ चीजें सीखी है डे बाय डे के अपने आप को कैसे मेंटेन करना है। इक्विपमेंट कैरी करना तो आपको सीखना पड़ता है, और जैसे जैसे आई टोल्ड ना कि जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे चीजें आती जाएंगी। Correct, Yes, correct, Khushi, correct. yes. So Khushi, basically, you said that a catheterization. There are many problems we face, while doing a sports. So other than that, what kind of आपको लगता है कि कौन से difficulties आपको आए to reaching out to coaches who can guide you, or other than that, places to find जहाँ पे आप practice कर सकते हो, because immediately as a disabled person we can't get any guide who can teach us, or ऐसे places where I can be play, as I told you previously also I am also facing some issue. So can you give a light about your life, how did you overcome, कैसे आपने किया? मैंने जब स्टार्ट किया था ना, दैट इज रियली, इवन आज की तारीख में भी हम जानते हैं कि हम लोग जगह के लिए तो काफी मतलब प्रॉब्लम होता ही है प्रैक्टिस के लिए, और अभी Correct. भी पैरा स्पोर्ट्स के लिए इतने कोचेस नहीं है, पीपल हैव, जो बहुत कम कोचेस है जिनको आइडिया है कि व्हीलचेयर पे कैसे खेलना है, या जो पैरा प्लेयर्स है उनको कैसे सिखाना है। इट्स वेरी, बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, बट आप कहीं भी जगह के लिए जा रहे हो फॉर योर प्रैक्टिस, यू हैव टू एक्सप्लेन कि आपकी जो व्हीलचेयर है उसमें जो आपके स्पोर्ट्स शूज है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपको वही आएगा, आप कहीं पे भी जाओगे ना कि आई वांट टू स्टार्ट अ गेम, तो आप वेन्यू के लिए जाओगे तो पीपल, वो सामने वाला बंदा आपको ना ही बोलेगा, बिकॉज वो बोलेगा कि आपके व्हीलचेयर से उसका जो फ्लोर है वो खराब होगा। वो उसकी जगह पे बहुत सही है बिकॉज वो फ्लोर्स बहुत कॉस्टली है। तो यू हैव टू एक्सप्लेन, आपको उसको समझाना पड़ेगा कि ये जो मेरा स्पोर्ट्स व्हीलचेयर है उसके जो ट्यूब है वो स्पोर्ट्स शूज से ही बने हुए हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी चीजें बतानी पड़ेगी, और सबसे मेन चीज के व्हाई यू वांट टू प्ले। Correct, correct. Great, great. So, this question is Aditya for you and Khushi. दोनों के लिए है. Anybody can, go ahead and firstly talk. So, आप दोनों professional हो. You both are working, okay? And there are many things, we have to manage work, our personal life, and sports also. So, how you both juggle around? आप कैसे manage करते हो दोनों चीज? If you can advise everybody that they are also doing the similar kind of, you are IT professional Aditya, Khushi is also working, so आप कैसे वो manage करते हो? Anybody can go ahead. I think we all have to realize that we have 24 hours in a day, right? I'll do a simple calculation. 9 hours of work, 8 hours of sleep. That leaves us with 7 hours. Good enough time to do anything that you want to do with your rest of your day. It's all about learning time management, and more than time management, it's about having the drive to do what you want to do. If you don't have the drive, अगर आपको कोई चीज करने का मन नहीं है, if you don't have that passion, you will not do. You will simply find excuses, and that's why, relating back to my first point, find a sport or find something that you want to do. Then you won't need to answer these questions कि time नहीं है, energy नहीं है, वो सब नहीं आएगा. You will automatically be able to uh, find time, energy, and everything to do whatever you want to do with rest of the 7 hours. Correct. Khushi, you want to add something here about your experience, like how you juggle around because for your personal life and sports? या श्योर। तो एज अ पर्सनल लाइफ मेरी जो है, तो आई मेंटेन, मतलब जैसे कि ऑफकोर्स टाइम शेड्यूल पे एक बनाना ही पड़ता है कि ये आपका वर्किंग टाइम है, इस टाइम पे आपको जिम जाना है, जो भी है, बट दैट इज एवरीवन मेंटेन। बट मैं कुछ और चीजें बताना चाहूंगी जैसे कि मैं करती हूँ।
समटाइम इट्स हैपन कि मुझे जिम जाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने कुछ वर्कआउट्स ऐसे करके रखे हैं जो मुझे एवरीडे पे करने ही है, कुछ शेड्यूल है मेरे। और मैं कुछ ऐसे ऐसे वर्कआउट्स भी मैंने ढूंढ के रखे कि एनीवेयर आई कैन डू, मतलब मैं उसे कभी भी कहीं पे भी करूंगी और वो मुझे करने ही है। बिकॉज यू नो आई एम एथलीट, तो मुझे पता है कि मुझे कई बार मुझे घर से बाहर भी रहना पड़ता है, सिटी से बाहर रहना पड़ता है। तो वर्कआउट मैंने कुछ ऐसे पैटर्न भी करके रखा है जो मुझे करना है ना। आई जस्ट फोकस के मेरा जो इक्विपमेंट्स है, मतलब जिसके लिए मैं वर्कआउट करती हूँ, अगर मैं पावर लिफ्टिंग करती हूँ तो मुझे पता है कि मुझे सबसे ज्यादा वेट ट्रेनिंग करना है। इफ आई एम नॉट गोइंग टू जिम, एटलीस्ट आई डू पुशअप, आई डू शिफ्टिंग, बिकॉज मुझे वेट कंट्रोल करना सीखना है। एंड सेकेंडरी चीज जो मुझे सबसे बेस्ट एक्सरसाइज लगती है, व्हील चेयर चलाना। आप कुछ और एक्सरसाइज करो ना करो, बट हाफ एन आवर एवरी डे में आप व्हील चेयर चला लो। और जो शिफ्टिंग वर्कआउट्स कुछ होते हैं मूवेबल, वो मैं चाहिए तो आपको कभी बता सकती हूँ, उतने भी करो तो इट्स इम्पोर्टेंट। एंड मैनेजमेंट तो ऑफकोर्स करना ही पड़ता है, बिकॉज प्रोफेशनली आई एम अ इवेंट ऑर्गेनाइजर, जो मैं स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ एज वीडियो एडिटर विथ माई स्पोर्ट्स। तो बहुत मैनेजमेंट है, उसे सीखती हूँ और भी करती हूँ। समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट, बट हाँ, एक टाइम शेड्यूल के हिसाब से मुझे चलना पड़ता है कि मुझे इतना टाइम यहाँ पे देना है, मुझे इतना टाइम यहाँ पे देना है, तभी मैं इतना टाइम यहाँ पे दे पाऊंगी। और उसके बाद मैं अपनी रिकवरी के लिए भी टाइम बचाती हूँ, जो मुझे मेरी बॉडी को देना जरूरी है। हाउ टू Correct. रिकवर योर बॉडी, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि मुझे फुल टाइम वर्क करना ही है 20। तो नो, मुझे मेंटेन करती हूँ मैं कि मुझे इतने टाइम इतना वर्क करना है, इतने टाइम इतना, और इतना वर्क करने के बाद मुझे मेरी बॉडी को रिकवरी के लिए भी टाइम देना है, बिकॉज वी आर अ स्पाइना बायोफिडा। तो हम लोग का जो बॉडी रिकवरी टाइम होता है नॉर्मल पर्सन से थोड़ा स्लो होता है, Right. एज माई एक्सपीरियंस। Exactly, exactly. So I would thank you so much, Khushi. I would, give a stage to Chandana to ask few questions to Aditya. Yeah. Thanks, Natalie. Aditya, I guess we all discussed this in our previous little chat, that, being in 21st century, most of the activities that we do are associated with time and money. So training for a certain sport, it could get expensive. So how do you have any tips for a disabled person who is interested in sports, but is from a different economical backdrop? See, I understand that, not everybody is belonging to the same economical background, and some of us might have lots of economical challenges. Uh, but I would say that we need to change our approach as how we look at these challenges. And I'll give you a very simple example, which is very much related to our day-to-day life, right? Uh, Being a disabled person, when I go out on my wheelchair, or for anyone else who is walking on legs, right? When you walk on the road, when you see a pothole, what do? You probably walk around it, or you probably, if it's a very small pothole, you can just jump over it. You just jump over it and you cross the pothole, right? Similarly, when you talk about economic challenges, right, it is a challenge which is similar to a pothole, which is stopping you from doing something. You need to find ways how to tackle it. Now, if I talk about today's century, especially, we live in a privileged century where there are lots of courses available for free that one can do to upskill themselves and start something of their own without any investment, right? It's so whenever we think about economic challenges, it's all about thinking a way forward that will help you take care of those things. I mean, we normally when we think about economic challenges, we think about hurdles like we don't have proper education, we don't have a proper job, or we don't have a proper skill set. But what is the solution? The solution is finding these online courses or finding a skill set that you can develop
into an earning potential, which can, help you start your own business or start your own venture. If let's say if you're having a challenge getting a job, just upskill yourself to start your own venture. It's not that difficult. Yes, it's challenging. Again, taking up a course and everything, finding the right course itself is a challenge. Agreed. But yes, if you want to grow in life, you have to take that challenge and you have to take that plunge. Thank you, Aditya. So Khushi, यही कहना चाहती थी. So we were talking about there are many things कि हमें money के challenges होते हैं, expenditures होते हैं, जहाँ पे हमें sports पे लगते हैं. Like there are many people who doesn't have a money, to start the sports. So what आपका thoughts क्या है उसके around? If the person doesn't have a money with the background, how they can upskill themselves? कैसे upskill कर सकते हैं खुद को और ये sports में आ सकते हैं? That आपने भी कैसे स्टार्ट किया वैसे ही. मनी ऑफ कोर्स मैटर, मतलब हाँ मैं भी उसी बैकग्राउंड से आती हूँ, फाइनेंशियली ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है. सो फर्स्ट यू स्टार्ट टू द, कई बार मतलब लोग बोलते हैं ना, जैसे मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो प्रॉब्लम थे, बट फर्स्ट जो आपका स्टेप आता है इट्स योर कोचिंग एंड योर डाइट. तो टेक अ नॉर्मल डाइट जो घर पे आप लेते हो विटामिन के लिए, मतलब वेजिटेबल्स एंड खुशी आप म्यूट पे हो. Now we can, yes we can hear you. So money is definitely matter for the sports, big part of sports for the money. तो फर्स्ट फॉलो फॉर तो आप खुद से पहले जितना हो सकता है उतना खुद से स्टार्ट करो. एंड सेकेंडरी चीज, फाइंड आउट सम गुड कोचेस और गुड प्लेसेस, उनको आप रिक्वेस्ट करो, दे डेफिनेटली हेल्प यू. ठीक है, एक वो चीज हो गई. बिकॉज स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जो आपको एज अ करियर भी ले सकते हो एंड एज पैशन. बट आपने मुझे पूछा जो मनी मैटर के लिए कैसे अपग्रेड कर सकते, तो फर्स्ट कोचेस एंड प्लेसेस ऐसे ढूंढो जो आपको सपोर्ट कर पाए. खुद को उस लेवल तक खेलो कि सामने वाला कोच डेफिनेटली एग्री हो जाए आपको सिखाने के लिए. एंड दूसरी चीज जैसे कि अभी हो रहा है, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल्स पे मेडल्स लाना स्टार्ट करोगे तो योर स्टेट गवर्नमेंट विल हेल्प यू. एवरी मेडल पे हर स्टेट अपने अपने हिसाब से आपको सपोर्ट करता है फाइनेंशियली. हर मेडल अलग अलग कैश प्राइजेस है, तो वो स्टेट आपको सपोर्ट करेगा. एंड वन यू टेक, एक बार आपने मेडल ले लिया, देन यू कैन अप्लाई फॉर अ साई स्पोर्ट्स एकेडमी हो गया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर डेफिनेटली हेल्प यू. एंड हाँ, तो स्पोर्ट्स को अपग्रेड ऐसे करना है, पहले फर्स्ट टारगेट डिस्ट्रिक्ट तक का बनाओ. डिस्ट्रिक्ट तक कैसे भी करके पहुंचो. डिस्ट्रिक्ट में मेडल आ गया तो गवर्नमेंट में आप मतलब मेडल आ गया तो ऑफकोर्स वो गवर्नमेंट को दिखेगा. देन यू स्टार्ट टू अप्रोच गवर्नमेंट कोचेस. जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा गवर्नमेंट सपोर्ट करते जाएगा, बट उसके लिए काफी सारे प्रोसेस है आपको जो करने पड़ेंगे. अप्लाई करना कैसे, और इवन यू कैन ऑल्सो टाई अप विद सम एनजीओज. आजकल बहुत सारे एनजीओज भी है जो सपोर्ट करते हैं आपको स्पोर्ट्स के लिए, तो आप एनजीओज को भी अप्लाई कर सकते हो कि सपोर्ट करें. बट सो खुशी, एक क्वेश्चन है हमारे चैट पे, ये तारल ने पूछा है कि हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टरी में कौन से फैसिलिटीज एंड ट्रेनिंग पर्सन विद डिसेबिलिटी फेस करते हैं चैलेंजेस इन इंडिया. ओके, एंड what are the initiative we can take for a spina bifida separately. So challenges एक है कि हमारे इंडिया में कौन से challenges है स्पोर्ट्स डायरेक्टली फेस करते हैं इन द डिसेबिलिटी कम्युनिटी, एंड फॉर द स्पाइना बाइफिडा व्हाट काइंड ऑफ हम इनिशिएटिव ले सकते हैं व्हिच आर नॉट देयर इन इंडिया राइट नाउ. ओके, तो स्पाइना बाइफिडा में तो हम स्टार्टिंग से, अगर जो आई रिक्वेस्ट टू आल्सो एसोसिएशन के जब 9-10 इयर्स के होते हो तभी से आप उनको स्पोर्ट्स एज ए रिहैब दे दो, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे. तो उनको
स्कूलिंग में भी काम आएगा स्पोर्ट्स कोटा से, बट आई एम कम टू द पॉइंट। चैलेंज हमारा क्या होता है विद द स्पाइना बाइफिडा, आवर बॉडी ग्रोथ आर वेरी डिफरेंट, बट जब आप स्पोर्ट्स में जाते हो तो मैं सिर्फ पैरा स्पोर्ट्स और स्पाइना बाइफिडा रिगार्डिंग बता रही हूँ, मैं अदर चीजें नहीं बता रही हूँ। जो मैंने फेस किया है, जो चैलेंजेस है, फर्स्ट फॉलो फॉर, आप जब स्पोर्ट्स खेलने जाओगे तो ज्यादातर लोगों को अभी भी नहीं पता है व्हाट इज स्पाइना बाइफिडा। वो आपको एससीआई से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से कंपेयर कर देंगे। और जो लोग स्पोर्ट्स खेलने का सोच रहे हैं उनको और एक चीज भी बताती हूँ, पावर लिफ्टिंग और एक दो स्पोर्ट्स जैसे बैडमिंटन को छोड़ के बाकी सारे जो स्पोर्ट्स चलते हैं वो क्लासिफिकेशन पे चलते हैं आपके बॉडी के। दैट इज अ वन चैलेंज कि आपको क्लासिफिकेशन, आपका जो स्पाइना बायोफिडा है तो आपको एसोसिएशन से लेटर वगैरह करवाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट अगर आप स्पोर्ट्स में जाते हो दे नो आइडिया व्हाट इज अ स्पाइना बायोफिडा। वो हमको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से खिलाएंगे एंड स्पाइना बायोफिडा पर्सन हैव नॉट दैट मच, कैसे मैं समझाऊं, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होते हैं ना वो एक एज के बाद आ चुके होते हैं जब उनका बॉडी पूरा ग्रो अप हो चुका रहता है फुल फिटनेस के साथ, एंड वी आर गोइंग बाय द चाइल्डहुड, हम अपनी डिसेबिलिटी चाइल्डहुड के साथ आए, तो वो एक आपको फेस चैलेंज करना है। सेकेंड चीज, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के लिए भी हम लोग को सीखना पड़ेगा बचपन से, बिकॉज मैंने काफी स्पाइना बायोफिडा को देखा है तो वो लोगों को अभी भी इतना ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज हमारे इंडिया में भी वी हैव नॉट दैट मच एक्सेसिबल। तो चीजें सीखो बाहर, जब बाहर आओगे तब एक्सेसिबल मिलेगा, हम ही बाहर नहीं जाएंगे तो हमें चीजें भी एक्सेसिबल नहीं मिलेंगी। फर्स्ट वी हैव टू कम आउट एंड वी शुड आस्क ये चीज एक्सेसिबल क्यों नहीं है। ये एक पॉइंट आ गया, क्लासिफिकेशन का मैंने बताया। और सेकेंडरी चीज जो हमें करनी चाहिए मेन, अभी भी जो पैरा स्पोर्ट्स चल रहा है वो 18 इयर्स के ऊपर के लिए है, अंडर 18 इंडिया में नहीं हो रहा है, बिकॉज अभी तक कोई स्कूलिंग का बच्चा या अंडर 18 नहीं आया है। सो अंडर 18 के लिए आई एम ट्राइंग, मैं ट्राई कर रही हूँ। एंड एग्जैक्टली अगर आप मुझे कोई परफेक्ट चैलेंज पूछोगे ना एक रिगार्डिंग पॉइंट पे तो मैं आपको बता सकती हूँ, ऐसे तो फिर बहुत टाइम भी चला जाएगा, बहुत सारी चीजें। तो वन पॉइंट यू आस्क मी दैट आई टेल यू व्हाट वी डू फॉर दैट पॉइंट। And Aditya, I have one question for you. Like in sports, we come with a a win and loses. There are achievements and failures, and there are many frustrations are there. So how you handle these kinds of frustrations and failures? How you tackle around it? The achievement and failures are always there, and I can relate to my first national event. Uh, I lost that competition. Okay, when I took part in the first, and I know for sure that I cried. I cried a lot and in front of almost everyone. So when you are taking part in competitions, you are trying to achieve something. You will not always win. आप competitions में part लोगे, there would be some competitions that you would win, there would be some competitions that you would lose. It's all part of the journey. The only thing that you have to realize is that you cannot stop just because you have lost a competition. You have to learn from your. I'm sorry, there's an echo. Uh, can you guys hear me? Yes, yes, we can. Yes. Yes. So yeah, you have to learn from your experiences. You have to learn why exactly you lost that competition. Understand your mistakes and grow forward. That's the only way you can. That's the only mindset that you can develop if you want to grow forward. You cannot have control over wins and losses. आपकी तैयारी एकदम perfect हो सकती है, but on that given day there might be someone else जिसकी तैयारी आपसे भी अच्छी है. So even though your preparation is perfect, you might still not win because there was someone who was better than you. So you have Correct. to realize that and keep pushing yourself out. Correct, correct. That we should not stop, and even though we get a failure, there should be some way, That is why we like sports, and there is a drive within us. Yeah, just learn. Like I mean, all my competitions where I've lost,
I have always gone back to my coaches and asked them the question that what exactly was lacking. Because you yourself might not realize what is lacking, but people who are observing you will be able to tell you more as to what went wrong. So always ask the observers, the people around you who have accompanied you, who are seeing you go on the stage competing, or who have seen you preparing, right? Ask them those questions. What went wrong? And you will get better answers. Correct. Yeah, Chandana, you can take it over. Yeah. Thank you. And Aditya, I guess this is another question for you. We talked about nutrition and your passion for nutrition a lot when we had our little chat. So, what you said that you always try to find alternatives for the people with different needs. So, could you please elaborate on that? How does expenditure and food, and how can one find different proteins if they have different health needs? That they can't, go with the cookie cutter diet sheet that is available in the market. See, our body is very intelligent in terms of taking the nutrients that we want to take for the sports, right? We all know that there are three major macronutrients that our body needs: proteins, carbohydrates, and fats. Okay. Now, I understand that if you take supplements, the growth and the recovery that we talk about in sports, it happens a lot more faster. Okay. Because the protein that you get from the supplements or the other dietary supplements that you take is very concentrated. So a single scoop of protein will have a lot more protein than you would probably eat in your normal diet. Having said that, like for me, I'll take my own case for now. Uh, I currently have an additional condition called kidney disease, right? Wherein I cannot take protein supplements. So because they are harmful for my kidneys. But does that mean that I stop exercising or I stop give or do I give up my passion? The answer is no. I have to find alternatives wherein what would work for me and what would not. So like in my case, if I give an example, I cannot take animal protein, but veg protein is still okay. But also that has to be taken in moderation, right? So there are alternatives. If you talk to dietitians, if you talk to your doctors, you will always find alternatives and that will help you with your medical condition and your body to push forward. Another example that I can take is for people who have diabetes and are put on keto diets now, right? Keto, as you know, is not very high on protein. They rely on carbohydrates and fats, and Right. primarily fats, right? So, but I know some really good powerlifters who are on completely keto diet and they're smashing their goals in powerlifting. So that's where we need to understand that you have to realize what kind of condition you have, what are the different kind of diets that you can take, because these macronutrients that we are talking about, they have a very interchangeable role. At the end of the day, they all break the nutrients that you have in the body into energy. It is only the time difference that they take to convert that nutrient into energy is taking effect. So once you understand all that concept about how these macronutrients are breaking the food into energy and how much time it is taking, you will be able to regulate your food intake, your nutrient uh, portion that you need to take, and you will be able to balance your meals as well as exercise. That's And true. Yeah. talking about the expenses, if you go natural by taking natural food, your expenses will cut down. Right. Yeah. And ever since you started training, are there any must diet tips that you have followed that you have
started and you are still continuing to this day? Anything that you start with your day with, or your day with? The one thing that you just cannot imagine your food cycle of the life without, being a trainer and also. I am completely against strict diet. Mm-hmm. I am one of those people who is very against strict diet. The primary reason being, if you become very strict with your routine, that this is what I have to have, you will tend to fall off track, because you will get bored, and or you might not have the inclination to follow that diet on a particular day. That's why I always talk about the goal in terms of how much food you need to eat, uh, take care of the macronutrients, and if you are able to take care of the holistic goal of calorie and the nutrient intake, you can eat anything within those limits. Right. That's again. That's a very important. You can even have an ice cream or a pizza if it meets your calorie goals. Mm-hmm. People normally will tell you that you can't eat ice cream, you can't eat pizza. I will say no. If let's say you have to eat 1,000 calories in a day, and if you are eating only a pizza which is probably 900 calories, go for it. Yeah. You're still saving 100 calories. So. That is true. That's for the cheat food. That's nice. And also believe you took a sabbatical, a gap year, and were still able to make the ends meet. So how did all the sports and everything that comes with it fit during this period? I'm sorry, could you repeat that question? Like, how you took a sabbatical, right? Yeah. And so you said that you were able to meet the ends. So how did the sports and training fit during this period of time? So as I mentioned earlier, that whenever you want to take up anything, be it sports or any passion, and you also want to make your ends meet, like we talked about the financial aspect earlier, you need to find ways to upskill yourself in a way where you are able to manage everything, right? So when I took a sabbatical, I looked into lots of things, like what other courses I can do, or what I can do uh, to earn at least enough to take care of my training and my own expenses uh, during the time I'm training for competition. So I got myself certified as a fitness trainer. I'm a level 2 certified fitness trainer and a nutrition consultant. So, and it's not something that I did online. I actually went to Mumbai, attended 2 in-person courses, got myself certified, and that's how I took it forward. So similarly, I mean, I had passion for physical fitness, so I got myself certified as a fitness trainer. Somebody else might have passion for, let's say, social media, so they can do a social media management course. Things like that. You can always take up courses. There are lots of free courses on Udemy. You can upskill yourself, manage your expenses, and have enough time to follow your passion. And would you say that the sabbatical year has helped you in terms of personal growth and your sports training? Oh, for sure. I mean, those 2 years it was complete 2 years, not even 1 year, 2 years, were full of learning. I learned a lot. I started my own initiative, Strength Thought, which is an initiative to uplift physically challenged people. So that initiative I started during this time only, and while working for that initiative, getting certified myself as fitness trainer, I even trained one person in my own society uh, who was who had a condition called Down syndrome, but he was passionate about weightlifting, so trained him as well. So there was a lot of learning in that experience, for sure, in terms of competing, in terms of training myself, training others, and starting my own business and this initiative Strength Thought. Definitely lots of learning. Yeah, congratulations on starting the initiative, actually. And anybody who is interested in it, we will be putting all the links in the chat box. So please do check it out.
Yes, my new And YouTube channel is starting soon. So please yes, look out for that as well. absolutely. We're really excited. And Maitli, on to you. Okay, thank you, Chandana. So my question is to Khushi. So Khushi, ये question था आपके लिए कि हमारे disabilities में everybody is not equal. There are many people who have a different kind of disability. Spina bifida is one of them, where severity of disabilities are different. So in that term, आपको क्या लगता है कि severity consider करके कैसे स्पोर्ट्स चूज किया जाए? करेक्ट. सो बिकॉज हर स्पोर्ट्स की कैपेबिलिटीज ऑफ बॉडी इज डिफरेंट. सो कैसे हम वैसे स्पोर्ट्स चूज करें सिवियरिटी होगी तो? ओके, गुड क्वेश्चन. फर्स्ट, दे आपकी बॉडी की जो डिसेबिलिटी है वो आप समझो, व्हाट इज योर स्टेमिना एंड व्हाट जो पावर है. उसके बाद बहुत सारे गेम्स के वीडियोस देखो, आप ये समझो कि आपको कौन से गेम्स आप खेल सकते हो. ठीक है, वहाँ पे भी स्टॉप नहीं होना है. फर्स्ट यू हैव टू ट्राई मेनी गेम्स कि आपके हिसाब से आपकी जो डिसेबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग डिसेबिलिटी, इज माय एबिलिटी, कौन से स्पोर्ट्स में मेरी एबिलिटी बेस्ट है, मैं वो फाइंड आउट करूंगी. बिकॉज मेरे साथ भी, मैं जस्ट 1 मिनट में शेयर माय जर्नी. मैंने बास्केटबॉल से स्टार्ट किया था, बट बास्केटबॉल इज टू मच डिफिकल्ट फॉर मी. Then I start to the long tennis. Long tennis is good for me because I love to play long tennis. And the end of the day, I try most of sports, but I understood that my body ability, it's my power. I can improve in powerlifting. करेक्ट. सो यू आर सेइंग कि हमें बहुत सारे स्पोर्ट्स ट्राई करने पड़ेंगे. यस, बिल्कुल, आपको स्पोर्ट्स खेलने पड़ेंगे. वी डोंट नो, आप टेबल टेनिस में बेस्ट हो सकते हो, आप बैडमिंटन में बेस्ट हो सकते हो. बिना करेक्ट. खेले आप अपने बॉडी को वो नहीं कर सकते कि मैं यही खेल सकती हूँ. एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए डिफरेंट स्कीम के आप कौन से में आप बेस्ट हो. एंड वन मोर थिंग आई सजेस्ट, आप करियर वाइज भी एक गेम सिलेक्ट करो, बट अपने हेल्थ वाइज, मतलब विराट कोहली है, सचिन है, क्रिकेट के अलावा भी वो लोग दूसरी गेम खेलते हैं. वो आपके एक्सरसाइज के लिए होता है, आपके माइंड रिलीफ के लिए भी होता है. तो वन गेम फर्स्ट, यू 1 ईयर तक आप गेम्स खेलो, गेम्स को समझो, कौन सी गेम आपके बॉडी के लिए बेस्ट सूट होती है. फिर उसमें कितना कंपटीशन है, दैट वाज अ डिफरेंट पार्ट, वो नेक्स्ट लेवल है. बट हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितना पावर है और कौन सी गेम में हम बेस्ट खेल सकते हैं. तो उसके लिए एक्सप्लोर करना पड़ेगा, गेम्स को समझना पड़ेगा. एक गेम पे नहीं रुक सकते. आई कांट से अगर मुझे सिर्फ पावर लिफ्टिंग पसंद है तो मैं दूसरा कोई गेम ट्राई नहीं करूंगी. मैं ट्राई करूंगी, मैं देखूंगी मैं उसमें बेस्ट कर पाती हूँ तो आई विल ट्राई दैट. करेक्ट, करेक्ट. सो खुशी, आपने बताया कि सिवियरिटी के वाइज एंड एवरीथिंग वी कैन चूज कि ये स्पोर्ट्स हम चूज कर सकते हैं, हमें अलग अलग ट्राई करने चाहिए स्पोर्ट्स, सो दैट एटलीस्ट वी कैन नो कि दिस स्पोर्ट्स इज सुटेबल फॉर मी. बट एज अ वुमन, what do you think, like there are women who need to succeed, there are many stereotype we need to break, जहाँ पे सोसाइटी ने बनाए होते हैं स्टेरियोटाइप्स वुमेन्स के लिए कि वी कैन डू दिस एंड दैट. सो व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू हैव फेस्ड एंड एज अ वुमन इन द स्पोर्ट्स? सॉरी खुशी, आई कैन हियर यू. या मुझे मतलब 2-3 क्वेश्चन आपके समझे नहीं जो अभी आपने हाँ, पूछा. मैं पूछ रही हूँ कि एज अ वुमन इन डिसेबिलिटी, what as a normal woman also we need to break some stereotypes to, you know, in order to succeed, because still in society हमारे यहाँ पे there are stereotypes are going. So as a woman, as a disability, what do you think, what are the challenges and how have you overcome that? एज ए वुमन सबसे पहले तो इंडिया में जो प्रॉब्लम आता है वो ट्रस्ट का है. यू आर अ गर्ल, हाउ यू गो अलोन अनदर सिटी, अनदर स्टेट, कैसे मैनेज करोगी, हम किसी पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं. आप तो डिसेबल हो, कोई कुछ कर लेगा तो यू कैन डू एनीथिंग. काफी सारे प्रॉब्लम्स आती है. तो उस चीज के लिए खुद को रेडी करो कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ एंड दिखाओ लोगों को. आई डू दैट. आई जस्ट वांट, मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था ना,
मैंने अपने आप को ये बोला था कि मुझे सबसे पहले खुद की मदद खुद को करनी पड़ेगी, तब लोग करेंगे। और लोगों को चीजें एक्सेप्ट करने में आज भी इंडिया को टाइम लग रहा है। आप करते जाओ, लोग चीजें एक्सेप्ट करते जाएंगे। यू नो, एक मैच खेलने के लिए आपके सामने 100 नेगेटिविटीज आएगी, बट यू डिसाइड आई हैव टू वन गोल। एंड मैं लोगों को सिखाऊंगी कि नहीं, चेंजेस जरूरी है। मैं करूंगी, मेरे पीछे दूसरे लोग करेंगे। If I am start to doing, I am start to find many people are following me. Right now, I'm not thinking about only the myself. काफी रिकग्निशन आते हैं आज की तारीख में। यू आर द नॉट गोइंग टू अदर, तू कैसे संभालेगी, ऐसा है वैसा है। स्टेट, मैं संभाल लूंगी। इफ यू हैव प्रॉब्लम देन यू कम विथ मी, यू हैव टाइम नाउ विथ फॉर मी देन यू कम विथ मी, आई वांट टू डू दिस, मुझे ये करना ही है। यू लव मी देन यू सपोर्ट मी एंड यू कम विथ मी, otherwise you allow me कि I will go make my career. You love me ना, you care about me, आपको मेरे लिए परवाह है। Well said, Khushi. Yeah. नहीं करना है, या तो आप मेरे साथ आ जाओ, या तो आप मुझे खुद उतना कैपेबल बनाओ कि मैं अपनी जिंदगी की फाइट खुद लड़ूं और एक एग्जाम्पल दुनिया के लिए बना पाऊँ। बिकॉज इंडिया में सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है, तू लड़की है, तू स्पोर्ट्स खेलेगी तो कल दूसरी कंट्री में कैसे जाएगी, तू ये कैसे करेगी। मैं लड़की हूँ बट मैं भी तुम्हारी तरह इंसान ही हूँ, कुछ गलत नहीं है। थोड़ा सा बॉडी चेंजेस है, खुद पे भरोसा रखो, सब कुछ सही होगा। और कहीं ना कहीं से चीजें शुरुआत करनी है ना हमको, तो ट्राई, चीजों को लाओ सामने खुद। मतलब मैं स्पाइना बाइफिडा के साथ तो मैं लोगों को बोल दूंगी, एज पेरेंट्स एक बार जाओ, 2 बार जाओ, अपने बच्चों को खुद सिखा दो, थर्ड टाइम मत जाओ। बिकॉज अगर आप चाहते हो कि उसका करियर यहाँ से यहाँ लेके जाना है, आपको उसे स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि यू डू ऑन योर सेल्फ एवरीथिंग। एंड जो मैंने फर्स्ट चीज आपको बोली थी, आपके अंदर हंगर है ना, तो यू कैन फाइट एवरीथिंग, यू फाइट एवरीथिंग, दैट्स इट। So Khushi, as you said, कि as a woman we face many difficulties and we have to break that, और हमें खुद से initiative लेनी चाहिए, हमारे surroundings को भी समझना चाहिए. But as a woman, there are other things also involved. Like we have a menstruation cycle जो every month होते हैं, correct? So what do you think that what kind of challenges you faced in that terms? How do you manage your training in sports in that period? Sorry, that is a part of woman, that is a part of our life for 25 to 20 years, 13 to 45 years, that is I think the part of our life. ठीक है, तो उसके साथ हम जब घर पे मैनेज कर सकते हैं, तो हम हमारा स्पोर्ट्स, हमारी दूसरी एक्टिविटीज पीरियड्स के साथ क्यों मैनेज नहीं कर सकते। वी कैन डू, एंड बहुत इजी है, मतलब कर सकते हो। और अभी तो आजकल बहुत सारी चीजें आ गई हैं इन चीजों के लिए, कप्स है, पैड्स है, मैनी थिंग्स आर अवेलेबल। एज मेडिकल इतना आगे बढ़ चुका है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। इवन आई शेयर माय एक्सपीरियंस, मेरा जो स्टेट लेवल का जो मेडल था वो मेरे पीरियड्स के मैंने 3rd डे पे लिया था, बिकॉज मैं मेरी ट्रेनिंग के लिए मुंबई से अहमदाबाद 25 डेज रही थी, और अहमदाबाद से मुझे कॉल आया था कि ना 3rd डे पे तेरा स्टेट लेवल का मैच है। मैं ऑलरेडी 25 डेज अहमदाबाद थी, और अहमदाबाद से मैंने ऑन द स्पॉट टिकट लिया था, मुझे इधर आना था नागपुर, अहमदाबाद टू नागपुर मेरा 27 आवर्स का जर्नी था। तो वो ट्रेन जर्नी में भी मतलब मैंने पानी नहीं पिया था, बिकॉज मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी। अकेले ट्रैवल में मतलब मेरे पास एक छोटा सा बैग में रखती हूँ और एक 4 ट्रॉली बैग रखती हूँ कि जिससे मैं खुद पुश करके कहीं पे भी ले जा सकूँ। आई हैव सम फोटोज दैट, जो मैं अपना ट्रैवल लगेज यूज करती हूँ। तो वो सारी चीजें मेंटेन करने के बाद भी वी ऑल वुमेन्स नो कि कई बार हम लोग अदर वेदर्स पे जाते हैं या मतलब सिटी के बाहर जाते हैं, तो पीरियड्स हमारा नॉर्मली आगे पीछे आ ही जाता है। उसे पार्ट समझो और उसके साथ अपनी चीजों को आगे बढ़ाओ। आई एम लकी, मतलब मैंने पीरियड्स के 3rd डे पे सिल्वर मेडल लिया था। आई मेंटेन माई सेल्फ ऑल टू, मतलब जो प्रिपेयर मतलब जो चीजें सेफ्टी के लिए चाहिए रहती है वो ऑलवेज मैं अपने पास रखती हूँ सारी चीजें।
एंड आज के टाइम पे तो यार हर किसी को पता ये चीजें नॉर्मल है. सो स्टेट नथिंग इट्स डिफिकल्ट. अगर जब करना हो ना, कोई चीज लाइफ में डिफिकल्ट नहीं है. बस ये चीजों के लिए तैयार रहो कि अगर मेरे साथ ये चीज आएगी तो मैं इसकी वजह से पीछे नहीं हटूंगी. मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगी कि मैं पीरियड्स में हूँ इसलिए मैंने ये चीजें नहीं की. मैं उस चीज को मेंटेन करना सीखूंगी कि मैं उस चीज के साथ अपने गोल को कैसे अचीव करूंगी. दैट्स इट. Sorry. Great. Yeah, Chandana, over to you. Yeah. Thank you, Khushi. That is very well said about the stereotypes and being a woman. I think we all needed to hear that. So thank you. And Aditya, this is a question for you. You know, we all have talked about expenditure and we have talked about a lot. And there's a very big part of putting ourselves in a physical endurance, which is the mental health, the mental stamina. And we all have one of those cloudy days where sometimes it's hard to even do the daily chores, get out of the bed. So how do you manage those days, especially when you thrive on being active? Like how do you build the resilience for the endurance sports that you need? See, first of all, we need to realize where whatever you want to achieve in life, whether it's sports or your career, it's not something that is going to happen overnight. It is a very long journey, and that journey has a graph which is full of ups and downs. You will not always be successful. You will not always be failing as well, right? Similarly, when you talk about energy to do your training or follow the diet, it also has ups and downs. And I can tell you that I had a bad day yesterday itself. I went to the gym and I just could not exercise the way I could on other days. It happens. It will always happen. It's not that it's happened to me today, and if I make my mindset today and if I do exercise today, it doesn't mean that I will not fail tomorrow. It might happen. All you have to understand is it's a process. We all need to stop being harsh on ourselves on the days when we are down, right? If you are failing, you are not able to exercise, or if you're not able to follow the diet, it's okay. You're a human being. So cut yourself a little slack there. Focus on the overall growth. Look how your graph is growing. For example, I mean, when I started powerlifting, I could not even lift the empty rod, right? And there was a stage when I reached 130 kgs. And reaching from that rod to 130 kgs, there have been many days when I was not able to lift, or when I was not able to follow the diet, or I even just didn't want to. I just didn't get up from the bed. Happens. Right. You have to look at your overall goal. You have to stay. So there's a lot of talk about being consistent. Now, being consistent is very wrongly understood as doing it every day and not missing out. No, being consistent means knowing your goal and working towards it, even if you're failing, fine. Even if you're not getting out from the bed one day, fine. But working towards it next day or day after, not postponing it endlessly, but yes, getting up next day and working towards it consistently is what that consistent means. It doesn't mean to become so rigorous or so strict on yourself that you pull yourself down on the days you are not able to get up or you're not able to exercise. Correct. Yeah. That's Yeah, how. not letting a bad day ruin it. Yeah, not letting it's just a bad day. It's just one day. Right. Yes. One Well day said. of, like, I'm talking about 3 months training for a single competition, right? One day in 90 days. And if you talk Yes. about 1 year, one day in 365 days, and if you talk about the whole life, one day in how many years? So let it be. Perception. Yeah, it's just one day. Let it be. Move on. Well said. Very well said. Well, I needed to hear that today. Thank you.
Maitli, would you like to continue? All right, great. So, Khushi, I have a question for you and also for Aditya also. So, for both, कि आप currently हमारे यहाँ पे बहुत सारे youngsters है. So, India is one of the youngest population, country. What do you both can advise or tell people how they can come and pursue sports, especially for the youngster, the kids. If you have. Anybody can go. Aditya, if you want, you can go ahead. So, one thing I would say to the youngsters out there, especially physically challenged, is don't limit yourself in mind. Your body has a limitation. I understand. I accept it. Yes, we all have limitation. I have as well. I'm a wheelchair user. We all have the some limitation or the other. Your body has a limitation. Accept it. That's the first step. The problem is we don't accept our limitations fully. That's one. Accept it and then see with your limitations what is the best that you can do. Focus on what I think this was said by someone who was physically challenged. I'm not remembering the name, but he said focus on what you can do rather than what you cannot do. So that is what we all need to understand. So when you want to talk about sports, to take up sports, try different sports. I have myself tried wheelchair cricket. I've tried basketball. I've tried wheelchair tennis. Lots of different sports. I even went to the rifle shooting range also once before taking up powerlifting. So I have tried different sports and finally selected one. So to these youngsters out there, I would say try everything once, and that's how you will know where exactly your passion lies, right? Even if you feel that there's a particular sport you feel is not for your body type, don't just think. First, give it a try. You never know what you might be able to achieve. And I'll give you a Correct. very simple example. I'm sure many people here know about Anand Arnold, right? He's the first wheelchair bodybuilder from India, and first wheelchair bodybuilder to actually win the world competition Arnold Classic, which is hosted by Nick Scott, where he won a silver medal and also a Best Poser award. And he's a wheelchair user, and I think he's the first wheelchair bodybuilder from India to reach that level. And at the time he started, nobody would have even thought that wheelchair people can do bodybuilding. Hmm. So if you, that's where I'm saying, don't think that a particular sport is not for you. First, give it a try, and then you will know what sports you can do, what sports you cannot do. Of course, it's very evident that there are certain sports I cannot play. I cannot play football. I cannot walk. So it's very evident. So um, keeping that joke apart, but you would know what sports you can play, what you cannot, and once you know, give every sport a try Correct. before you settle down on one. Right. Exactly. Could you want to add in? Yeah, I add in whatever you want to choose as your career, but take a sports as your rehab. I just tell to all my Spina Bifida friends, take a sports as your rehab and as your workout if you are not going for workout or not anything. But please take a sports like your rehab session. जैसे कि आप उसको एक रिहैब में ले सकते हो क्योंकि उससे डे बाय डे आपकी बॉडी में मूवमेंट्स बढ़ते जाएंगे बाकी डे बाय डे स्पोर्ट्स से आपकी बॉडी में मूवमेंट्स बढ़ते जाएंगे हार्मोन्स प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी जो हम लोग को हार्मोन्स प्रॉब्लम्स होती है फैट लॉस होते जाएगा it's totally depend on you कि you want to go as a career sports or not but add on your life sports को एटलीस्ट एक रिहैब की तरह ऐड करो अपने लाइफ में बिकॉज अगर हम अदर कंट्रीज में जैसे कि मैं सर्च कर रही हूँ तो वहां पे स्पोर्ट्स खेलना नेसेसरी है वो लोग 2 और 3 स्पोर्ट्स तो नेसेसरी खेलते बिकॉज के आपकी बॉडी को
बहुत सारा हेल्प मिलता है स्पोर्ट्स से, फिजिकली, मेंटली, एवरीथिंग. दैट वाज अ डिफरेंट पार्ट कि आपको उसको गोल बना के आगे लेके जाना है, पैशन की तरह रखना है. बट एज योर रिहैब, दैट आई एम टेलिंग, मे बी व्हाट यू आस्क, तो के हमें यंगस्टर्स को, तो मैं सारे यंगस्टर्स को यही कहना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स खेलने से ना, फर्स्ट जो हम लोग का डाइजेशन प्रॉब्लम होता है वो धीरे धीरे सॉल्व होते जाएगा. और जितना आप खेलते जाओगे ना, आपको नॉलेज, बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे. और फर्स्ट ऑफ थिंग आपको सीखने मिलेगा कि फेलियर और विन को दोनों को कैसे मेंटेन करना है. हाउ यू मेंटेन योर फेलियर एंड योर विन पार्ट्स. हारना और जीतना मेंटेन, रिहैब की तरह लो और स्पोर्ट्स खेलो, काफी सारे फूड्स खाओ. बट या कोई एक गेम को एज अ रिहैब लो, स्पेशली फॉर द स्पाइना बायोफिटा. दैट्स माय call for every youngsters. Let other your choice, but at least take a rehab. How did you feel, Maithili? We are good friends, so you just start to very short time to badminton. So कैसा feel हो रहा है? You have your different career goals, but you play at least 1 hour in a week. So how did you feel? I feel really really good because वहाँ पे I can meet people. I can see कि what kind of challenges they are facing, and I learn from them. There is some kind of confidence I've built while using wheelchair. So because before that I used to do swimming, so there was nothing kind of, wheelchair was involved. So while using wheelchair, playing badminton, kind of acceptance has built it in me. So yeah, really, Khushi, that helps me. So other than that, I want to ask both of you is that whenever we think कि sports है, मतलब वो all kind of fitness, this is for body and everything. But Aditya and Khushi, I want to ask कि sports, how do you deal with mental health and everything in that terms? Because sports we always feel कि हाँ body exercise करना है, body fit करना है, but mental health is also important. So how that helps? Yeah. Sports is always fill you young childhood things. So happiness अपने आप ही आती है. स्पोर्ट्स आपको ऑलवेज एक बच्चों की तरह फील देता है, हारने जीतने पे. और आपको सीखने के लिए ऑलवेज वो एक रहता है, मुझे एक शॉट खेलना है. इफ आई वन डे वन मैच मैं उसको चीज को अच्छे से नहीं खेल पाई ना, तो मुझे वो सिखाएगा वो शॉट मुझसे अच्छा क्यों नहीं हुआ है. तो आई एम ट्राइंग कि मैं उसको ट्राई करती जाऊँ एंड बेटर टू बेटर. तो वो मेरा मतलब फर्स्ट थिंग तो कि हार्मोन सॉल्व होते, तो हार्मोन सॉल्व से काफी मेंटलिटी प्रॉब्लम, मेंटल जो हेल्थ है काफी फिट रहता है. सेकेंडरी, व्हेन यू प्ले स्पोर्ट्स यू टायर्ड, यू स्लीप बेटर. योर उससे भी स्लीप से भी काफी आपका मेंटल हेल्थ जो फिटनेस है वो काफी सॉल्व होती है. सेकेंडरी चीज जैसे कि यू सोशली होते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, सीखते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है. तो या मेंटली भी आप काफी फिट रहते हो स्पोर्ट्स खेलने से. एंड वन मोर थिंग है दैट आई टोल्ड यू कि विन एंड लूज को बैलेंस कैसे करना, दैट स्पोर्ट्स टीच यू. यू आर नॉट एंगर व्हेन यू आर द लूज, यू आर नॉट टू मच हाई लेवल व्हेन यू आर द विन. सो स्टेबल बनाना सिखाता है, आपके माइंड को काम रहना सिखाता है, गिव यू Correct. वन गुड डिसिप्लिन इन योर लाइफ. स्पोर्ट्स. Aditya, what are your thoughts on around it about mental health and sports? See, sports, according to me, definitely helps your mental health, right? But more than mental health, I think it's important understand selecting the right sport, because at the end of the day, as I said, it's something that it should make you happy, right? Doing something. So once you have selected the right sport, it's making you happy, and you are smashing those goals day in day out, whether in practice or in competitions, automatically your confidence builds up. You have to do a lot of things when incorporating sports in your life. The training itself requires discipline. Taking part in competition requires you to go out, be social, talk to people, accept failures, accept wins. I mean, embrace everything in the challenge and everything that comes with it, right?
So it develops your overall personality, mindset, and emotional intelligence also. Right? When you talk about mental, it's important to talk about emotional intelligence as well. So it develops your mindset as well as emotional intelligence to uh, accept different aspects of life which are there otherwise as well, because the same aspects of life that are there when you talk about sports in that brief time, the intensity is about 100 times more. And if you can handle that intensity in that 100 times more environment, right, you will be able to handle the rest of your life very easily. Correct, correct. And one more thing, a last one from my side, is that so don't you feel demotivated while seeing other youngster doing, sports which are, we can also do it other than that. So regarding the mental health kind of way, if you can advise, yeah, I think you're talking about when you see other people doing things that you cannot do yourself, right? correct. Tell me something. Tell me one person in this world who can do everything. And no, nobody is perfect, right? Nobody is perfect. Once you realize that, you will realize that everybody has something that they cannot do. You have your own set of challenges. Somebody else has their own set of challenges. Just because he or she is able to do something that you are not able to do, does not mean that he or she is not able to do something that you are able to do. So stop thinking about what other people are able to do or what you are not able to do that others are able to. Think about what you can do best and just go for that thing. Exactly. Well said. And do you have any other have a plans for Paralympics or anything? It's a Definitely much weighted question. Definitely trying for it. I am practicing and with an aim to start competing again. But yeah, I'm taking it slow because mentioned that I have that kidney issues. So I definitely cannot be as rigorous as I could earlier. So definitely taking it slow and hopefully someday for sure. We're really looking forward to it. What about And you, Khushi? yes. My plan is okay. Olympics. I try my best. If I get, then I go. But my goal is मुझे मेरी खुद की sports academy बनानी है. I make my own academy for sports. Everyone come and get equal right. For a para sports or normal person, both are equal. And for the rehab that I told you, कि वहाँ पे एक spina bifida के लिए specially for the rehab and equal right for everyone sports. जैसे कि मैं ऑलरेडी मेनी पीपल्स आर नोइंग आई एम डूइंग इवेंट्स जो मैं वुमेन्स के लिए भी करती हूँ कि स्पोर्ट्स उनको एज अ फिटनेस की तरह उनको मैं बाहर लाती हूँ और स्पोर्ट्स इवेंट खिलवाती हूँ कि वो हैप्पी हो अपने हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सोशलाइज हो सके एंड फुल चाइल्डहुड सो या माय लाइफ गोल इज आई वांट ओपन माय एकेडमी एंड उसमें फर्स्ट पार्ट रहेगा rehab for the spina bifida and equal life for the everyone in sports. And I try my best for the Olympic. I try for my best for the Olympic. That's wonderful. So yeah, my goal is I want to open my academy. Yeah. And before we open up the floor for audience to ask question, I have one last question, and I guess both you, Khushi and Aditya, both of you can answer this one. Along with playing sports, you also have day jobs. So do you remember any interviews where putting down sports in your resume gave you that extra edge in getting the job? Because conventionally in India, sports in childhood or college, it's always been looked as a hobby and nothing more. So what's your take on that? Do you have any personal experiences in regards to that? So for me personally, yes, I will not say extra edge, but as we talked about me taking a sabbatical, but during that sabbatical, since I played sports, I took part in competitions, started my own initiative, and thought it shows my employers that I was
not sitting idle and not doing anything, because normally whenever you take a break, most employers actually look for how did you utilize that break. They're Correct. trying to judge the mindset of a person, right? So when I put in those achievements and all the initiatives that I've taken during that sabbatical period, they know that, okay, fine, this person took a sabbatical from the corporate life, but he was not sitting idle. He was still trying to achieve something, and he did achieve something. So it speaks about my capabilities, and it's not taken as a bad thing on that career gap. Right. Well said. And Khushi, anything you'd like to add to that? Sorry, Chandana, I'm not getting your question. Oh, sorry. When we do sports, we use it. We can also use it in terms of getting a job, putting it on a resume, getting a job. So, did it ever happen to you? Did you ever have experience where sports has helped you in getting the job? Definitely, sports is helpful for the job. That you are asking ना कि sports आपको job के लिए मतलब your help कर सकता है या नहीं? Correct. कि बिल्कुल स्पोर्ट्स आपको जॉब के लिए भी हेल्प कर सकता है, इवन आपके स्टडी में भी हेल्प कर सकता है. आफ्टर योर 10th you will be good in the sports, then sports quota स्टडी के लिए भी काफी हेल्प कर सकता है आपको. And the second come out that you are the international or national player, then definitely you have some number of medals you win, that government will be provide you job. मतलब वो हर साल फॉर्म निकलते हैं जो विन जीतते हैं नेशनल इंटरनेशनल, उन लोग के लिए फॉर्म निकलते हैं. एंड एज पर योर जो आपका बेस्ट रहेगा, आपके क्राइटेरिया में आपको जॉब मिलेगा. यू आर सिक्योर. और अगर एक बार आपको जॉब मिल गया, then you can play both sports and your job, because then your government will be fully sponsor your sports. Yes, Sports definitely help you for the job. Okay, thank you. So that's all we have, like questions from our side. It's really hard to shortlist the questions we want to ask you guys. There's just so many, but we're going to open up to the audience. If anybody have any questions that they would like to ask people, please do so. And please do put it in the chat if anyone have any questions. There's somebody that asked here on the Instagram. They asked, is it important to practice sports with other people with disabilities? That's their question. And either of you can take it up. So when you say important to practice sports with other people with disabilities, I mean, it's important to practice in whatever environment that works for you best, right? If it motivates you to work with other people like yourself, go ahead, do that. If it motivates you to work in a blended environment where there are able-bodied people as well as physically challenged, do that. Don't stop yourself. Don't limit yourself in thinking that I will only interact with physically challenged people, right? One of the I'm sorry, I'm promoting my channel a bit here, but one of the initiatives of Stentor is to build an all-inclusive channel where we all come together, both physically challenged as well as able-bodied, come together to uplift each other, right? So, and you cannot think about practicing only with physically challenged people. You're living in a world where everyone is there. You're coexisting, right? So you cannot think about just practicing with able-bodied or with physically challenged. It's always best to have the best of both worlds. Practice with everyone. Understand different challenges. Understand different things that you can achieve. That's how you will grow. And also, I guess there's a question from our fellow member Kosha. Does constraints and facilities make things difficult? I'm sorry? The constraints, any constraints in the facilities, inaccessibility, it could be the little things for other people, but big things for us. Would that make things difficult?
And accessibility is a big concern in India for sure. There are not lots of inaccessible, not lots of accessible gyms in India. And especially when I say accessible, one of the major things that is misunderstood in terms of having accessibility is people think that just putting on ramps everywhere makes things accessible. No, when you talk about accessibility, you have to talk about ramps. You have to talk about having big changing rooms, especially if you talk about, let's say, gyms, right? Since we are powerlifters, you have to talk about having big changing rooms where the wheelchair has enough space to move around. You have to talk about having wheelchair accessible washrooms. So definitely, accessibility is a big challenge around in India, but then it's up to us how we find ways around it to be able to still go to the gym and move forward. Uh, One of the other challenges is the mindset, as Khushi mentioned earlier as well. When you go to the gym, there is a lot of opposition that why a wheelchair user should not go to the gym. I have faced that myself, right? So you have to find ways to convince people that, yes, you are someone who is equally capable of going to the gym and working out there, because there are lots of concerns, not just in terms of our wheelchair, but our own safety is also a concern, which is a very genuine concern that anybody would have who is dealing with us. So it's up to us to make them understand that all safety measures are taken care of by ourselves and they don't have to worry about it. And once that is there, I don't think it's a big challenge. Right. But yes, Great. accessibility is something that India can improve. Yes. That's it. Exactly, Aditya. So, next question is from Kosha only for Khushi. So, Khushi, if you see that person with disability go through many surgeries, बहुत surgeries होते हैं. There are sources that happen every now and then while we sit on wheelchair and everything. So, is that वो कुछ ये चीजें हमें डिमिन करती है, हमारी moral motivation कभी कभी low कर देती है. So, what do you think? How we can overcome that? And how you manage those things? फर्स्ट तो मतलब काफी सारी सर्जरीज यू आई एम नॉट एग्जैक्टली मतलब मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया. Okay, my question was कि as a disabled person we go through many surgeries, there are many injuries will happen, bed sores होते हैं. So वो imply होता है कि हमारी motivation कम हो जाती है in terms of और practice affect हो जाती है. So how do you deal with it? Right. Okay, I'll give the answer. First, surgery. Surgery, it's give you the सबसे अगर demotivate part आपकी लाइफ में आता है तो that's your surgery. You are the right. After surgery, so many people are demotivated. But that is the time you have to motivate yourself. Rehab. इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना. Right now I'm studying on rehab. After surgery, 15 days you need a rehab. Okay, nothing is happened, everything is normal because so many doctors are here. तो डॉक्टर्स को भी पता होता है कि सर्जरी के बाद सबसे बड़ी चीज अगर कोई आपको हेल्प करती है तो वो रिहैब है. आपका रिहैब सेशन मतलब आपको एक्टिव रहना है. मेंटली जितना आप एक्टिव रहोगे उतना आप जल्दी कम बैक करोगे अपनी हर चीज में. आफ्टर सर्जरी यू हैव टू ओनली टेक केयर कि मुझे क्या चीजें नहीं करनी है जिससे मुझे मेरी सर्जरी जो हुई है उस पे इफेक्ट होगा. अदर चीज यू आर बाय स्पाइना जस्ट वन ओके दैट वाज आई कम टू आफ्टर दैट. तो सर्जरी के बाद पहले तो ये ध्यान रखो मुझे कौन सी चीजें करनी है और मुझे कौन सी चीजें नहीं करनी है. स्टार्ट टू कम बैक टू नॉर्मल लाइफ. अपने आप को वीडियोस दिखाकर लोगों को मतलब अपने आप से नीचे देखो. दे विल गिव यू ऑलवेज मोटिवेट. यू सीन वन वीडियो हाउ मच डिफिकल्ट एंड सी द वन वीडियो व्हाट इज अ गोल. यू ऑलवेज बी मोटिवेट इन योर लाइफ. मुझे नहीं पता मैं जो बोल रही हूँ मैं एक्सप्लेन ठीक से कर पा रही हूँ नहीं
बट मेरी लाइफ में मैंने 28 सर्जरीज की है। तो मेरी सर्जरीज में मैंने अपने आप को ऑलवेज इस ऐसे मोटिवेट रखा है कि कुछ दिन है बस निकल जाएंगे, उसके बाद मुझे मेरे गोल को टच करना है, और उसके लिए मैं एवरी डे अपने आप को रिहैब करती रही हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाती रही हूँ। मैंने अपनी चीजें अपने आप करनी सीखी अपने हर सर्जरी में। डॉक्टर से बात करो, आपका डॉक्टर एग्जैक्टली अगर आपको अपनी सर्जरी के बारे में बता देगा ना, तो आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगा आफ्टर योर सर्जरी। दैट इज अ वन थिंग। सेकंड चीज, मैंने जो बैक सोर के बारे में पहले भी बताया था, प्रिकॉशंस लो, ऑलवेज अपने आप को मॉइस्चराइज रखो, दिन में एटलीस्ट 2 times change your clothes. If you are a wheelchair user person, at least 2 times you take a bath, change your clothes before bed, and after 15 minutes take one push up like this. एयर प्रेशर जाना चाहिए, मतलब कंटिन्यूस प्रेशर नहीं आना चाहिए। एटलीस्ट आफ्टर 15 मिनट्स यू गिव वन पुश अप्स। सबसे ज्यादा बचना है तो बैक सोर से बचना है। ऑलवेज मॉइस्चराइजर रखो, पुश अप्स करो, जितना हो सके उतना क्लीन रहो, टाइम टू टाइम कैथेटराइज करो खुद को। Yes, Khushi. Thank you. Thank you so much. और All the points should be noted down. जितना स्वेटिंग बॉडी से बाहर निकलेगा ना, उतने प्रॉब्लम्स कम होंगे। Correct. That is true. It's a lifestyle. We need to make such changes in the lifestyle. Yeah, we'll be taking from Sailesh. He asked, how difficult is it to find a coach who's willing to train physically challenged or who has trained physically challenged people? Do you have any personal experiences? Either of one of you can go. It's difficult finding a coach, and as I said, it's they are more concerned about the safety, whether they would be able to handle it or not. So yes, it is difficult finding a coach because it's not easy still for people to understand and have that confidence that we can push ourselves in the gym and we can exercise, right? So finding a coach is difficult. Probably what I would advise people is the way I started is start by contacting a coach who can help you exercise at home, right? Start with something at home with very basic exercises. Once your coach develops confidence that okay, you are able to do something at home, introduce some weights. Maybe you just start with free hand exercises, move on with the resistance bands, and then start with weights, light weights at home. Once the coach sees that progression, and if you then suggest him that you feel that it's time that you should go to the gym and start exercising there, he or she by that time will have confidence. Okay, yes, this person can do something. So, and if you are lucky enough, like I was, if you can find a coach who can actually train you directly in the gym, then nothing like it. Go for it. Yeah, that's true. Thank you so much. And before we wrap it up, we would love to commemorate this moment. So if I can request everyone to turn on their cameras, I'll take a quick screenshot so it can go on the foundation's wall of fame. Anyone who is comfortable, please turn on their cameras. Take a quick picture. Please show us your brightest smiles. 3, 2, 1. Perfect. Thanks, guys. Thank you so much for joining. We have my fellow moderator, Samin, who couldn't join in the beginning, and she would be doing the ending honors. Samin, you can go ahead. Towards the end of this program, thank you, Aditya, for sharing your journey. Khushi, I will especially thank you for giving us the time, even though your mother is unwell. Thank you, Chandana and Maithili, for wonderfully moderating this program. Finally, I would like to thank the participants for ending the webinar. I hope this program was fruitful and has inspired everyone. Thank you and have a good weekend. Thank you, Samin. Thank you, everybody. Thank you so much, Chandana and Spina Bifida Association and Samin. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you so much. Do not forget to follow Strength On. Good plug. Good plug in.